which is a little over 40 years ago. तो महाराज को 40 साल हो गए हैं इस्कॉन में. And I entered the sannyas ashram in 2009. और महाराज ने 2009 के अंदर संन्यास दीक्षा ग्रहण करी थी. Which is about 13 years ago. 13 साल पहले. So, if you have your hand in your bead bag, take your hand out of the bead bag and put your beads back in, and then you can start the round again later. आप यदि माला कर रहे हैं तो माला करना बंद कर दीजिए कृपा करके. Because you cannot chant japa during class. Is he conscious? You cannot chant japa during class. क्लास के समय पे आप जप नहीं कर सकते. So if you want to chant your japa, we do not mind. Then you can leave the temple room and you can go someplace quiet where you can hear your chanting. तो यदि आपको जप करना है तो आप कृपा करके मंदिर के हॉल से बाहर जा सकते हैं और शांति से जप कर सकते हैं. But if you want to hear class, then you cannot do two things at the same time. You will not be hearing the class and you won't be hearing your chanting. So it's a disservice to both. तो जो है आप क्लास के समय पे जो है जपा दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आप. Jaya Radha Madhava Kunjabi Ahari Radha Madhava Kunjabi Ahari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Ahari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Gopi Jana Vallabha Girivardha Dhari. 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 Yasodanandana Raja Janaranjana. Yasodanandana Raja Janaranjana. Yasodanandana Raja Janaranjana. Yasodananda Yamuna
Jaya Radha Madhava Kunjabi Ahari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivrajapacharya Astaturu Shamad Divine Grace Shilabai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder BBT Founder Srila Prabhupada Ki Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivrajapacharya Astaturu Shamad Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki Ananta Koti Vaishnav Vranda Ki Natai Go Premanande Hari. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga Go Premanande Hari. हरि बोल. Hare Krishna. Is sound okay? It's too low? We have to increase or what? It's fine? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भगवते वासुदेवाय. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते देवाय. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय. So today we have a special presentation of how Krishna consciousness began in Bharata Bhumi or India. Can you please repeat, Maharaj? Can you hear me? You can hear me? He's right next to me. It's strange. Huh? You can hear. But he's sitting right next to me. You cannot hear. Maharaj, Maharaj. Maharaj कर रहे हैं. Sure.
Now we'll sit in front of the books. So now they'll get darshan of you and not the books. Face the audience. Face Nishingire. Nishingire. So today is a special presentation in relation to Srila Prabhupada and his devotees, how they began Krishna consciousness in Bharata Bhumi or India. तो आज जो है एक विशेष प्रेजेंटेशन महाराज के द्वारा है कि प्रभुपाद ने जो है इस्कॉन जो है कैसे शुरू किया, भारत में कैसे शुरू किया. You want to translate? He's correcting you. Are you nervous? Are you nervous? Little bit. I should have brought my stick, danda. I should have brought my danda, then it'll make you more nervous. He didn't hear that. So some things he likes to hear and some things he doesn't like to hear. He's naughty. So translate that Maharaj said, I am naughty. Translate that. See, he didn't get it. मैं शरारती हूँ. Yes, but he didn't say Maharaj said that he's naughty. महाराज मेरे लिए कह रहे हैं मैं शरारती हूँ. Naughty. So Srila Prabhupada began the Krishna consciousness movement in New York City in 1966 with much pain and suffering. प्रभुपाद ने 1966 के अंदर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इस्कॉन की शुरुआत करी, बहुत सफरिंग के साथ. You can hear. So by 1969 there were several centers in the US and one center in England and one in possibly Germany. तो 1970s के अराउंड 1969. 69 के आसपास जो है जर्मनी में एक सेंटर था, इंग्लैंड में एक सेंटर था और न्यूयॉर्क में एक सेंटर था. See, hard of hearing from this side to there. He's different. He's just naughty. You're hungry. You want prasada. But everyone can hear. He can't hear. What is this? Only for you, not for them. For him also. For him also. I have ear problem also. He got hearing problem. So he's not the right person to translate. He's just gonna be like that every time. You have to. You can translate. Tell the sound person. See, sometimes when the sound is good, then they make it not good. कई बार आवाज अच्छा होता है लेकिन See, now there's no sound. Hare Krishna. better. Say Hare Krishna. हरे कृष्णा. That okay? Better? Mataji, better? Raise your hand again. No, you said you did something like that. What's that? हम सब
were saying for volume only. Thumbs up. No, we call That it. drink in the bottle? Or? Okay. They're really naughty. She's naughty. He's naughty. He's not translating. That he heard it, he don't translate. महाराज कह रहे हैं कि वो भी नोटी है, ये भी नोटी है. You must speak in the microphone. महाराज कह रहे हैं वो भी शरारती, ये भी शरारती है. So, in 1969, Srila Prabhupada requested the temple presidents to send their best devotee from their temple to join him in India in 1970. तो 1969 में जो है प्रभुपाद ने जो है टेम्पल प्रेसिडेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो उनके सबसे अच्छे भक्त जो हैं उनको इंडिया भेजते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए. So Srila Prabhupada mentioned what he could not do for 43 years, from 1922 to 1965. He did in 3 short years in the West, from 1966 to 1969. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो आप पिछले 40-45 साल के अंदर नहीं कर पाए वो 66 से 69 3 साल के अंदर जो है वो हो गया. So he felt that now he should start his World Sankirtan Party in India, Bharata Bhumi. तो प्रभुपाद जी ने निश्चय किया कि ये जो संकीर्तन मूवमेंट है अभी भारत में शुरू होना चाहिए. World Sankirtan Party, not Sankirtan movement. संकीर्तन पार्टी, नॉट मूवमेंट, संकीर्तन पार्टी. World Sankirtan Party. वर्ल्ड विश्व संकीर्तन पार्टी. Tell him I understand Hindi. You don't give own purport, don't give your own translation. You follow what I'm saying. Okay. Now, all of them arrived in various ways in Mumbai and joined Srila Prabhupada here. तो सभी जो है अपने अपने तरीकों से मुंबई पहुंचे और प्रभुपाद को ज्वाइन किया. Now, Srila Prabhupada trained his disciples in almost 3 years. And let's see what they do here in Bharata Bhumi, India. तो प्रभुपाद जी ने 3 साल तक भक्तों को जो है प्रशिक्षित किया था. अब वो देखना चाहते थे वो भारत में क्या करते हैं. There were no temples. कोई मंदिर नहीं था भारत में उस समय. Some devotees came earlier, but we really didn't have anything. तो कुछ भक्त जो है पहले ही आ गए थे लेकिन उस समय तो कोई मंदिर नहीं था. So in August to October 1970, they all arrived here. तो अगस्त 1970 के आसपास वो सभी भारत पहुंच गए. That's why I wanted to sit near me so he knows which page. It's gone there now. Problem. So you go to contents page. So in chapter 1 is on to India, chapter 2 all the way to chapter 13 is from October 20th to March 25th, October 20th, 1970 to March 25th, 1972, about 1 year, 6 months of traveling with Srila Prabhupada in India. 30 devotees, about 30. तो ये जो अक्टूबर 20 1970 से 25 मार्च 1972 Prabhu, hold the microphone to your mouth. अक्टूबर 20 1970 से लेकर 25 मार्च 1972 तक जो है ये इसमें जो प्रभुपाद के साथ जो 13 भक्तों ने यात्रा की भारत के अंदर उसके बारे में है. And don't rush and speak, you're not in a hurry. You're like, go slowly. Okay. So Srila Prabhupada covered the various places, which is in the book, which is penned down by His Holiness Giriraj Swami, who was one of the members of the party. तो इसमें गिरिराज महाराज ने इस किताब के अंदर उस यात्रा के बारे में लिखा है. गिरिराज महाराज भी उस जो पार्टी के एक सदस्य थे. Is he speaking too fast? Okay. So from Mumbai they went to Amritsar. तो मुंबई से अमृतसर.
then Delhi, Vrindavan, Indore, Surat, Mumbai again, दिल्ली, वृंदावन, इंदौर, सूरत, मुंबई, then Allahabad, Gorakhpur, then Mumbai again, then Kolkata, Delhi, Madras, Mayapur, and Kolkata. उसके बाद कुंभ मेला में इलाहाबाद, गोरखपुर, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और फिर दोबारा मायापुर में। So I'm going to read a little bit part of the book um, to show you how Prabhupada trained his disciples to preach to and even can defeat the greatest scholars in India. तो महाराज जो है इस किताब में से पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे इंडिया के उनको डिफीट किया, especially the Mayavadis and impostors. विशेष रूप से जो मायावादी और निर्विशेषवादी थे उनको। So in Amritsar, from October 20th to 30th, 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में 1970 में अमृतसर में Srila Prabhupada was invited as the main speaker with his dancing white elephants. That means the Western body devotees, he called them, the So- dancing white elephants, to a Vedanta Sammelam conference. एक वेदांता सम्मेलन जो था उसके अंदर प्रभुपाद जी को इनवाइट किया गया था बोलने के लिए 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में उनके जो वाइट एलिफेंट डिवोटीज हैं जो विदेशी भक्तों को प्रभुपाद जैसा बोलते थे उनके साथ के अंदर। So at the Vedanta Sammelam conference, तो वेदांता सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में most of the speakers were Mayavadis. जो ज्यादातर बोलने वाले थे वो मायावादी थे, But Prabhupada was the main attraction with his Western bodied disciples. लेकिन प्रभुपाद जो थे मुख्य आकर्षण थे अपने विदेशी शिष्यों के साथ। So page number 9. पेज नंबर 9 पे I'm reading first paragraph. As it turned out, all the Mayavadis claiming, I am God, you are God, everyone is God, couldn't hold the attention of the public. तो जैसे ही सभी मायावादी जो है वो बोल रहे थे कि मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, सब भगवान है, तो पब्लिक जो है उनका आकर्षण उस पर नहीं बन रहा था। So every evening the organizers would beg us to come to the pandal, though we were always reluctant to go, as we knew we have to sit and listen to many Mayavadis giving boring speeches in Hindi. तो सभी जो है हमको मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप पांडाल में आइए, जो लेकिन हम नहीं जाना चाहते थे। हम जानते थे कि हम जो है हमको बैठना पड़ेगा और जो ये मायावादी के जो बोरिंग लेक्चर जो है हमें उनको सुनना पड़ेगा। Gurudas commented that the Mayavadis said they were God, but they had to come begging to the devotees of God to perform kirtan. तो गुरुदास प्रभु थे, उन्होंने बोला कि ये मायावादी हालांकि ऐसा बोल रहे थे कि वो भगवान है, लेकिन वो जो भगवान के भक्तों के पास में आके भीख मांग रहे हैं कि आप यहाँ पे आओ और कीर्तन करो। So the organizers gave several rooms to Srila Prabhupada and his women disciples and his men disciples. तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने प्रभुपाद जी को और उनके शिष्यों को जो है उन्होंने कमरा दिया। So now close the book. So one night, it was very cold outside, but the devotees couldn't sleep. तो एक रात बहुत ठंडी था तो भक्त लोग सो नहीं पाए। So the manager, he made the devotees stay in a large hall with the other visiting Mayavadi speakers. तो भक्त लोग जो थे एक बड़े से हॉल में थे और वहाँ पे दूसरे मायावादी स्पीकर भी थे। But Giriraj Swami and Gurudas were feeling very uncomfortable to sleep
in the same room with the Mayavadis. लेकिन गिरिराज महाराज और गुरुदास प्रभु थे, वो उसी रूम में सोने में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, जिसमें मायावादी भी थे. So one of the Mayavadi gurus, he came over to Gurudas to preach to him. एक मायावादी गुरु हैं, वो गुरुदास प्रभु के पास में आते हैं उन्हें प्रीच करने के लिए. And he said to Gurudas, we are all God, just like the sparks of the fire and the fire are one. हम सभी भगवान हैं, जैसे आग का जो एक चिंगारी और आग दोनों जो है सेम है. Then Gurudas said to this big Mayavadi guru, he said, they are similar and the sparks have the quality of fire, but not the quantity. तो गुरुदास प्रभु ने कहा, हाँ वो गुणात्मक रूप से समान है, लेकिन मात्रात्मक रूप से समान नहीं है. Just like we may have the qualities of God to be godly, but we are not God. तो उसी प्रकार से हम जो है, हमारे पास भगवान से हम गुणात्मक रूप से एक हो सकते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते. And then Gurudas defeated him with one statement. तो गुरुदास प्रभु ने सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर उसे डिफीट कर दिया. He said, you can't cook a meal with a spark. उन्होंने बोला कि आप जो है खाना नहीं बना सकते एक चिंगारी से. You need fire. आपको अग्नि की जरूरत पड़ेगी. So he's telling him, if you take one spark, can you cook? So the Mayavadi said no. He said, how we can be equal? तो गुरुदास प्रभु ने बोला कि यदि आपके पास में एक चिंगारी है तो क्या आप खाना बना सकते हैं? तो मायावादी बोला कि नहीं. So this Mayavadi sadhu, he got defeated, but he won't give up. तो ये मायावादी साधु जो था वो हार गया था, लेकिन वो मतलब छोड़ने के लिए तैयार नहीं था. And then this Mayavadi sadhu said, and he took out one thread from his blanket, and it was cold. He took out one thread from his blanket and he said, you see, this thread is the same as the blanket. तो उस मायावादी सन्यासी ने क्या किया, उसका जो कंबल था उसमें से एक धागा बाहर लिया और बोला, देखो ये धागा और ये कंबल एक ही है. So what Gurudas did, he took away the blanket. तो गुरुदास प्रभु ने क्या किया, कंबल ले लिया. And he took out one thread. एंड देन उसमें से एक थ्रेड उन्होंने बाहर निकाला. And he said, since you said the thread is as good as the blanket, now you take this thread and keep yourself warm. तो गुरुदास प्रभु ने कहा कि ये आप धागा जो है आप ले लो और जाओ यहाँ से. And Gurudas folded the blanket and used it as a pillow. और गुरुदास ने जो है कंबल को जो है फोल्ड किया और उसे जो है एक तकिए के रूप में इस्तेमाल किया. And he said, if they are the same as you were saying, then this thread will keep you as warm as the whole blanket. So take the thread and keep warm. तो गुरुदास प्रभु ने बोला कि ये दोनों एक ही हैं, तो इस जो है इस ठंडी के अंदर आप इस जो धागा है इससे काम चलाओ. तो ये दोनों एक ही है ना, तो इससे धागे से काम चलाओ. So after 1 hour, the sadhu was shivering. तो आधे घंटे के बाद में जो जो ये साधु था, इसको बहुत कपकपी छूट गई. So he came back to Gurudas. तो वो गुरुदास प्रभु के पास में वापस आया. He said, you have proven your point. उन्होंने गुरुदास प्रभु को बोला कि आपने अपना जो मत था वो सिद्ध कर दिया. The thread is not the same as the blanket. जो धागा जो है वो कंबल के समान नहीं है. And the sadhu offered obeisances to Gurudas. और साधु ने जो गुरुदास प्रभु को प्रणाम अर्पित किया. And he said, you have defeated me. और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे हरा दिया. And Gurudas said, don't bow down before me. You bow down before my Guru, A.C. Bhaktivedanta Swami. तो गुरुदास प्रभु ने कहा, मेरे सामने मत झुको, जाके मेरे गुरु A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के सामने झुको. And when morning came, the sadhu went to Prabhupada and he offered full obeisances. और जब सुबह हुई तो वो साधु प्रभुपाद जी के पास में गया और उन्हें दंडवत किया. So you can see Prabhupada, Srila Prabhupada ki. So you can see Srila Prabhupada, he just trained his disciples in 3 short years up to 1969 and he brought them to India. They can't speak Hindi, but they can defeat the biggest Mayavadi gurus.
तो देखिए आप, प्रभुपाद जी ने 3 साल 1966 से 69 में अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया और भारत लेके आए, और वो इतने काबिल हो गए कि उन्होंने इतने बड़े मायावादी को जो है हरा दिया। And Srila Prabhupada said that he suffered so much to bring Krishna consciousness to the West. और प्रभुपाद जी ने कहा कि जो वो कृष्ण भावनामृत विदेश में लेके आए, तो बहुत मुश्किल से उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। And then he brought his Western bodied dancing white elephants from August 1970 to March 1972, 1 year, 6 months. And he commented, he said, now I have brought you to India so that you can suffer for me. तो Because वो they don't know the language, they don't have any facility. तो अगस्त 1970 से जो मार्च 1972 के बीच में वो ये अंग्रेजी शिष्य थे, उन्हें भारत लाए और उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारे देश से प्रचार करने के लिए इतनी कठिनाई सही थी, अब तुम इधर जो है वो मुश्किल से इधर भी तुम प्रचार करो। Like when they, Prabhupada said, jump off here and, and, and this is the capital city of India, Delhi, and build and see what you can do and open a temple. प्रभुपाद जी ने बोला कि ये दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पे आप मंदिर खोलिए। So these 5 devotees in Delhi, in a dharmashala where the predominantly Muslim people stay in old Delhi, they were sleeping on the floor. तो 5 भक्त तो थे वो जो पुरानी दिल्ली के अंदर जो है धर्मशाला में ठहरे, कोई मुस्लिम धर्मशाला, तो वहाँ पे वो फर्श पे सोते थे। And during the night they were so tired that rats the size of small cats were walking over their bodies. और वो वहाँ पे स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पे रात के समय पे चूहे उनके शरीर पे चलते थे। Then they got dysentery, high fever and other sicknesses. उनको बहुत सारी बीमारी हो गई, जैसे दस्त, उल्टी दस्त, ये सब चीजें। And despite that being so sick, they had full faith in Srila Prabhupada and wanted to please him. And every day they went out still in old Delhi on Harinam Sankirtan. तो इतनी बीमारी के बावजूद भी प्रभुपाद को खुश करने के लिए वो पुरानी दिल्ली डेली बाहर जाते थे हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। And then that was on October 30th. ये अक्टूबर 30 की बात है। So a few days later, they wrote a letter. Srila Prabhupada was in Mumbai. तो थोड़े दिन बाद उन्होंने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा। प्रभुपाद उस समय मुंबई में थे। And they explained to Srila Prabhupada it's very difficult. There's no toilet. There's no drinking water. There's no facility. We are suffering here. तो उन्होंने प्रभुपाद को पत्र में लिखा, यहाँ पे जो है मतलब स्नानागार, इन सब चीज़ों की, पीने के पानी की, इन सबकी ठीक से व्यवस्था नहीं है, तो हम बहुत यहाँ पे कठिनाई से हैं। But still we're going out every day on Harinam Sankirtan. लेकिन फिर भी हम जो है डेली यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन निकाल रहे हैं। Then Srila Prabhupada wrote a letter back, and that letter they received on November 7th, 1 week from October 30th. तो प्रभुपाद ने उनको जो है मतलब इस पत्र का जवाब दिया। And in that letter, Srila Prabhupada wrote many things. And he said, okay, don't do Harinam Sankirtan on the streets. You try to see important government ministers and other people. तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, आप हरिनाम के लिए मत जाइए बाहर, देखिए वहाँ पे जो है। And then Srila Prabhupada wrote in one line, and you also must try to see and meet Indira Gandhi. और आप प्रभुपाद ने लेटर में लिखा कि आपको जो है इंदिरा गांधी से मुलाकात करने का प्रयास करना चाहिए। They have no money, उनके पास में कोई पैसा नहीं था, and whatever little paisa, not even rupee, कुछ पैसे ही थे, रुपए भी नहीं थे। they get when they go on Harinam Sankirtan, then they buy some vegetables and get a decent meal. तो वो हरिनाम संकीर्तन में जाते थे, तो उसमें कुछ सब्जी खरीदने के लिए उनके पास पैसे थे। They have no place to stay. उनके पास में कोई रहने का स्थान नहीं था। They got dysentery, high fever, typhoid, all sorts of diseases. उनके इतनी सारी बीमारियां थी, दस्त, उल्टी दस्त वगैरह ये सब। They can't speak Hindi. उनको हिंदी नहीं आती थी। And Prabhupada is telling them the letter, you must try to meet Indira Gandhi. और प्रभुपाद पत्र में लिख रहे हैं कि आप जाके इंदिरा गांधी से मिलिए। No communications department, no temple.
but you try to see Indira Gandhi. कोई रहने का जगह नहीं है, मंदिर नहीं है, लेकिन आप जाके इंदिरा गांधी से मिलिए। And they had faith in Srila Prabhupada. ओ- And they had faith in Srila Prabhupada and they wanted to please him despite all the inconveniences. तो वो सब भक्त लोग जो हैं वो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते थे। And they did see Indira Gandhi a few days later. This is the first picture in the book. और थोड़े दिन बाद वो सच में जाके इंदिरा गांधी से मिले, और यहाँ पे पिक्चर भी है इसके अंदर उस मुलाकात की। What was impossible turned to become possible. जो असंभव था वो संभव हुआ। You will see Gopal there, Das. Next to him is Guru Das, then Yamuna Mataji, then Indira Gandhi, then Giriraj Swami, and then Bhakta Bruce, who later became Bhanu Swami, who lives in Chennai now. तो महाराज जिन भक्तों का नाम ले रहे हैं वो इस तस्वीर के अंदर हैं, भानु स्वामी, गिरिराज महाराज, यमुना माता जी आदि। ये सब भक्त इस तस्वीर में हैं। So like that in the book, there's 20 pages of photos. तो इस किताब के अंदर 20 पन्ने जो हैं उसमें फोटोएं हैं। And this photo that I showed you from the book, और महाराज ये तस्वीर black आपको and दिखा रहे white, हैं, बुक में तस्वीर दिखा रहे Indira हैं। Gandhi herself personally requested the devotee, please, we'll take a photo. She wanted the photo. Take it. तो इंदिरा गांधी ने भक्तों को निवेदन किया कि मुझे एक फोटो लेने दो। And later on, Srila Prabhupada said, this is one of the best features of my preaching in India. तो प्रभुपाद जी ने बाद में बोला कि मेरी जो प्रचार जो है भारत के अंदर उसका ये सबसे मुख्य आकर्षण है। Because this photo became very valuable because the devotees were being accused of being CIA agents and drug peddlers in India. Then when they see this photo with Indira Gandhi, oh, how can they be there with Indira Gandhi? They can't be CIA agents. तो उस समय भक्तों के ऊपर आरोप लगाए जाते थे, आप सीआई एजेंट हैं, ड्रग जो है उसकी स्मगलिंग करने वाले हैं। तो भक्त लोग इस तस्वीर का सहारा लेके दिखाते थे, देखो हम वो कैसे हो सकते हैं, देखो इंदिरा गांधी के साथ हमारी ऐसी फोटो है। So if the Prime Minister knows the devotees, then it's all okay. तो यदि प्राइम मिनिस्टर को हमारे साथ फोटो है, इसका मतलब भक्त लोग अच्छे हैं। So Prabhupada said this was a very valuable meeting you had. तो प्रभुपाद ने कहा आपकी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई इंदिरा गांधी के साथ। And she gave time. She gave about 45 minutes, which is a long time with the Prime Minister. और इंदिरा गांधी ने समय भी दिया, 45 मिनट तक ये मीटिंग चली थी। So like that in various ways, there's 40 color photos in the book. This book is printed by the Bhakti Book Trust, BBT, in Delhi, from BBT, Australia. ये जो बुक है ये बीबीटी के द्वारा पब्लिश की गई है। इसके अंदर 40 तस्वीरें हैं, एक पेज पे 2, इस हिसाब से करीबन 40 तस्वीरें हैं इस किताब में। So before I speak more about the book and its distribution, we can take questions from you on any subject in general. Any questions we'll take now, and then we'll go back to speaking more about the book. तो आपका यदि कोई प्रश्न है इस किताब के से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। You can ask the question even in Hindi. आप हिंदी में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। Anyone? किसी का कोई प्रश्न इस किताब से संबंधित किसी भी विषय में? He's naughty again. Little bit. No. There's one hand up there. Microphone. Everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maharaj ji, Hare Krishna. Hare Krishna. Name? Maharaj, my name is Van Bihari Das. Huh? Van Bihari Das. Van Bihari. Yes, Van Bihari Das. What you doing in Mirror Road? Supposed to be in some van. Okay, question? So, Maharaj ji, my question is that how this book is different from
प्रभुपाद लीलामृत। So can you say now your question in Hindi? महाराज जी ये बुक जो है ये प्रभुपाद लीलामृत जो किताबें हैं उससे डिफरेंट कैसे है ये, क्योंकि इसके अंदर प्रभुपाद जी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उनके चरित्र के बारे में, उनके कार्य के बारे में। Just like His Holiness Giriraj Swami wrote a previous book called I'll Build Your Temple, the Juhu Story. In the Leelamrit, it's only very briefly given in a few pages. तो लीलामृत जो किताब जो है उसमें बहुत संक्षिप्त में दिया गया है। Giriraj Swami gave it in 800 pages in great detail. तो गिरिराज महाराज ने जो आई विल बिल्ड यू ए टेम्पल जो बुक है उसके अंदर 800 पेजेस के अंदर बहुत विस्तार से वर्णन किया है। So similarly, these things are briefly, or in a small summary is mentioned in the Leelamrita. But there's great detail of what really happened here. तो लीलामृत के अंदर बहुत संक्षिप्त में है और इस किताब में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। So for one page in the Leelamrita, you'll get 20 or 30 pages of the same incident in detail. तो लीलामृत में जो एक पेज है यहाँ पे 20-30 पेज उसी इंसिडेंट्स का जो है उसी घटना का वर्णन है। And you can compare and see for yourself. आप जो है कंपेयर भी कर सकते हैं। So Van Bihari, Prabhu, you're going to take the book later, right? Yes or no? वन बिहारी प्रभु आप एक किताब लेंगे। Next question. और किसी का कोई प्रश्न? Mataji's Vaishnavi's question. माताजियों में वैष्णवियों में कोई प्रश्न? Prabhu. किसी प्रभु जी का कोई प्रश्न? Yes, Mike. Yeah, Hare Krishna Maharaj. My Hare- question is Your related- name? My name is Radharaman Damodar Das. Radharaman Damodar. Okay. So, Maharaj, my question is related to the incident that you have mentioned. Like devotees were having, facing many challenges. Like they were having diarrhea, fever, and all those things. Still, they believe that they got the instruction from Prabhupada that you have to meet Indira Gandhi. So how to build that faith and how to, have that confidence. Okay, I got the instruction, and then I need to forget about my bodily concept and just follow that instruction. And finally, they made it also. So how to build that unflinching faith and overcome the bodily concept and try to fulfill the Guru Maharaj instruction. So I just wanted to understand. So say all that in Hindi now. हम महाराज जैसे आपने बताया कि भक्तगण जब दिल्ली में थे तो उन्हें शारीरिक स्तर पे काफ़ी परेशानियां आ रही थी, उनको बुखार था, डायरिया था, और तब जब उन्होंने अपनी समस्याओं को प्रभुपाद जी को बताया तो प्रभुपाद जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि ये सब ठीक है, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण कार्य करिए कि जो इंदिरा गांधी हैं उनसे मीटिंग सेटअप करिए, क्योंकि वो हमारे टीचिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण घटना होगी। तो उसके लिए जो श्रद्धा उन्होंने दिखाई और अपने शारीरिक समस्याओं को पीछे रख के उन्होंने गुरु के जो इंस्ट्रक्शन थे उनको फॉलो किया, तो वैसी श्रद्धा कैसे हम लोग डेवलप करें अपने अंदर? So do you give him the microphone? Do you have faith that Krishna is Bhagavan Swayam? Do you have faith that Krishna is the Supreme Personality of Godhead? Yes, Maharaj. Yes. So with that faith, the first thing you have to do is you must complete your japa as early as possible in the morning. Okay, Maharaj. You understand? Yes. So now you say that in Hindi to everyone. My response. जैसे महाराज ने बताया कि महाराज बोल रहे थे कि आपको विश्वास है क्या कृष्णा तू भगवान स्वयं? तो मैंने बोला हाँ है। तो महाराज ने बोला अगर आपको है तो आप सुबह उठ के
सबसे पहला कार्य करिए, अपने जो जपा है 16 राउंड उसको सुबह कंप्लीट करिए, संपूर्ण करिए। Because when you have faith in somebody, you want to please them. Yeah. Say in Hindi. अगर आपको किसी में श्रद्धा है तो आप उनको प्रसन्न करना चाहेंगे। So you have faith in Radha Krishna in the form of Hare Krishna Maha Mantra, and you want to please Radha Krishna by chanting Hare Krishna Maha Mantra. और जब आपको राधा कृष्ण जी में श्रद्धा है, फेथ है, तो आप उनको प्रसन्न करना चाहेंगे और प्रसन्न करने का माध्यम है हरे कृष्णा महामंत्र जपा करके। Then after you do that, then you have to still perform your duties as a father or husband or son or mother or wife or daughter. You have to do those duties. और आप अपना जो साधन है भक्ति उसको करने के बाद आपकी जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एज ए फादर, एज ए पिता, माँ, बहन, एज ए एम्प्लॉय, वो आपको पूरा करने हैं। You cannot be neglectful of your family duties. You have to be responsible. आप अपनी जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप छोड़ नहीं सकते, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। At the same time, you're not staying in a home where you have rats going all over your body every night when you sleep, right? You don't have that. Say that. सो हमारी स्थिति भी वैसी नहीं है जहाँ हम रात में सो रहे हैं और हमारे ऊपर चूहे जा रहे हैं और हमारी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वैसी स्थिति हमारी नहीं है। And you have enough prasad to eat, right? और हमारे घर में प्रसाद भी है जो हमें मिल रहा है। So you have more than enough basic food, clothing, and shelter. सो जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग को मिल रही हैं, कपड़ा, मकान और घर। So you're not suffering सो हम लोग सफ़र नहीं हो रहे हैं यहाँ पर and you don't easily get sick. और हम लोग बीमार भी नहीं है, वी आर नॉट, हाँ हम लोग बीमार भी नहीं हो रहे। So that means you're in your comfort zone. सो इसका ये मतलब है कि हम लोग आराम से रह रहे हैं अपने घर में। That is all due to the hard work of Srila Prabhupada and his early disciples. We have such a beautiful temple here. सो ये नतीजा है जो पहले प्रभुपाद जी और उनके डिसाइपल लोग ने जो संघर्ष किया है उसका परिणाम स्वरूप हम लोग इतने आराम से भक्ति कर पा रहे हैं और इतना अच्छा मंदिर भी है यहाँ पर। So don't take what you have for granted because you didn't work hard for it. और ये सारी चीज़ को हम ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं बिकॉज हम लोग ने ये सब हमारे प्रयास से नहीं हुआ ये सब। So in order to perform some austerity or tapasya, or perform some renunciation of vairagya, तो हमें कुछ तपस्या और वैराग करने के लिए so you get out of your comfort zone. सो हमें जो हम जो आराम से जो रह रहे हैं उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। And you do one or more of 3 activities. और हम लोग को ये 3 कार्य करने पड़ेंगे। You take some books हमें कुछ किताबें लेनी है and you go out on the street और हमें बाहर रास्ते पे जाना है and you try to distribute them. और हमें वो वितरण करना है। And you go out on Harinam Sankirtan. और हम लोग को हरिनाम संकीर्तन में जाना है And then you go out and distribute prasad. और हमें बाहर जाके प्रसाद वितरण करना है। So you are coming out of your comfort zone to perform some tapasya to spread Krishna consciousness to others who are suffering. तो हम जो आराम वाले स्थिति में रह रहे हैं उससे हमें बाहर आना पड़ेगा और हमें टीचिंग करनी पड़ेगी ताकि जो बद्ध जीव हैं जिनको कृष्णा कॉन्शियस के बारे में पता नहीं है वो इसका लाभ ले सकें। Srila Prabhupada wrote in one letter that if you at all feel indebted to me, प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था कि अगर आप किताब महसूस करते हैं मेरे प्रति, and then he said, of course, you cannot repay the debt to me. और आप वो जो कृपा है वो उसको आप पे नहीं कर सकते हैं, But if you want to repay the debt to some extent, but not completely, which is not possible, बट अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उसमें सहयोग कर सकें जो मैंने आपको कृपा दी है थोड़े मात्रा में, then you must preach vigorously like me. तब आप तीव्रता से प्रचार करिए। But you can only preach if you feel sheltered. और आप तभी प्रीच कर सकते हैं जब आप
शरणागत में हो, then you can give shelter. तभी आप दूसरों को शेल्टर दे सकते हैं, If you शरणागत don't कर feel सकते हैं। shelter, how can you give shelter? You अगर cannot. आप शरणागत नहीं हो तो दूसरों को भी आप शरणागति नहीं दे सकते। So feeling sheltered means the favorable association of devotees, सो शरणागत मीन्स, शरणागत का अर्थ है आपके साथ भक्तों का संग है, and avoid committing offenses. Don't commit Vaishnava aparadh. और जो भी अपराध हैं, वैष्णव अपराध, वो हमें नहीं करने हैं। And feeling sheltered means to associate with Radha Krishna every morning by chanting one's japa and being attentive to hear your japa. और शरणागति का ये भी मतलब है कि सुबह उठ के हम राधा कृष्णा जी के संपर्क में आए जपा के माध्यम से, और जपा करके अपना शरणागति भाव उत्पन्न करें। Then when you feel sheltered like that, then you can go out and give that shelter to others who are suffering. और जब आप ये साधना भक्ति करके जब आप खुद शरणागति महसूस करेंगे, तभी आप दूसरों को दे सकते हैं। Through book distribution, to distribution of prasad and distribution of the holy name. तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, संकीर्तन करना है और प्रसाद का वितरण करना है भक्तों। And that's not very difficult for you to do nowadays. और अभी तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आजकल हम आराम से कर सकते हैं। As they were begging for paisa donations. और पहले पैसा के लिए वो लोग सबसे मांगते थे। हाँ, Now you will get rupees and lakhs and crores. ना we have ना हमारे पास लाख और करोड़ धन है। Okay. थैंक यू महाराज। यस। So in order to get that inspiration to do that, you have to take many books and give your friends and let these devotees who suffered inspire you to do that. It's all written in detail in this book. सो ये जो किताब है इसमें सारा जो संघर्ष है डिटेल में लिखा है, और शरणागति का सारे ये भी लिखे हैं, और आप इसको लेके अपने मित्र को दे सकते हैं ताकि वो भी शरणागत हो सके। So when you see how these devotees suffered in India, then you realize what I'm doing is not even suffering, it's enjoyable. जब आप देखते हैं कि पहले के डिवोटी कितना सफ़र किए थे, तो आपको मालूम पड़ता है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कंफर्ट जोन में हैं। Everything is given to us. सब कुछ हमें मिला है। So we have two nice questions. Anyone else? हरे कृष्ण महाराज। Comment? Somebody said Hare Krishna Maharaj. Somebody has a question? Yeah? Everyone? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna. Hold it close, hold it other way. No, other way. Yes. Hare Krishna. Dandavat Pranam Maharaj. Hare Krishna. On your name? Pavan Nimai Das. Pavan Nimai. Yes, Is Pavan Nimai. That means he is merciful, as good as Lord Chaitanya. Maharaj, like some days before, I was just discussing like about Ramayana. So there is a controversial topic, Sambuk Vad. So Lord Rama, he killed Sambuk, who was a Sudra. So like there Say that again. were, Some controversy about Ramayana. yeah. So So Sambuk some Vad, book is there. Sambuk, yeah. He Wait, was wait, a, wait. yeah. Who translated the book? So the which book? Like Ramayana. So actually, I was giving class somewhere. Who translated the book? So actually, somebody asked question to me. 1 minute. Yes, Maharaj. Say what you said in Hindi and say my response in Hindi so others can understand. हाँ, तो मैंने महाराज जी से प्रश्न पूछा कि कुछ समय पहले एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक आया था मेरे सामने, उसमें संबुक वध का एक एपिसोड आता है रामायण के अंदर कि भगवान राम ने संबुक का वध किया था। तो महाराज जी ने पूछा मुझसे
कि वो बुक किसने लिखा था या ट्रांसलेट किया था. So you didn't read the book. You, आई डिड Pavan Nimai, did you read the book? नहीं, मैंने बुक नहीं पढ़ा. उसका कुछ सेक्शन ऑनलाइन कुछ मुझे दिया था किसी So ने, you वो went मैंने. online and read the book. So actually somebody asked question to me, then I went online and I tried to read something. Yeah. So you ask the person, the book that they are reading that they refer to, would you see him? Who translated the book from which scripture? There's many books and everyone says it's Ramayana. Says all this in Hindi now. हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि आप बहुत सारा रामायण के नाम पे फैला हुआ है, तो पहले ये पता करो कि वो किसने लिखा हुआ है. Now it's good time to make money. अभी ये अच्छा समय है पैसा बनाने का. You create one book in the form of Ramayana and it will sell very fast because they open temple in Ayodhya. तो अभी आप कुछ भी रामायण के ऊपर लिखो और आप उसको बेच सकते हो. For example, when you see Ramayana TV serial many years ago with Shriman Ramanan Sagar, you know, अब रामायण का सीरियल देखते हो जो रामानंद सागर ने बनाया था कई सालों पहले. so there it is shown that Sita was kidnapped by Ravana. उसके अंदर ये बताता है कि सीता जो है वो रावण के द्वारा किडनैप की गई थी. But Sita was never kidnapped by Ravana. बट माता सीता कभी भी रावण के द्वारा किडनैप नहीं की गई थी. How can Mahalakshmi herself, Sita Devi, be touched by somebody else? कैसे साक्षात महालक्ष्मी सीता देवी किसी के द्वारा स्पर्श की जा सकती थी. This is given in a few verses from the Kurma Purana that is given in Chaitanya Charitamrita that the Maya Sita or the illusory Sita, Chaya Sita was taken by Ravana, not Sita herself. कूर्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है जो कि चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि रावण छाया सीता को लेकर के गया था. But that they won't say and that they won't show in movie. लेकिन वो इसका वर्णन नहीं करेंगे, उसको मूवी में नहीं दिखाएंगे. Because they like to show how women are being abused. क्योंकि उन्हें ये अच्छा लगता है दिखाना कि कैसे स्त्रियों को शोषण किया जाता है. So that will excite all the sinful people to go for other men's wives and do the same. वो बाकी पुरुषों को इस प्रकार से प्रभावित करेगा कि बाकी स्त्रियों को वो शोषण करें. So by seeing such Ramayana where Sita is kidnapped by Ravana, then you'll do the same for other women. You're not getting purified because it's not true. इस प्रकार से वो ऐसा दिखा करके बाकी पुरुषों को भी और स्त्रियों का शोषण करने के लिए इन्वोक करते हैं और इस प्रकार से कोई शुद्ध नहीं होता है. And sometimes you'll read some translation of a book, even some scripture on online or some other person, but you don't even know who the author is who translated. बहुत बार हम ऑनलाइन या अलग अलग स्रोतों से पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि उसका ऑथर कौन रहता है. And the author may be having 2 wives and 2 girlfriends, and you're reading his book because you don't know him. ऑथर का खुद का भी कुछ चरित्र नहीं होता है, उसके अलग अलग पत्नियां होते हैं, बच्चे होते हैं. Because he's following Ravana, he kidnaps other people's wives and have association with them, and he's giving the book. क्योंकि वो खुद रावण का फॉलोअर रहता है और इसलिए वो रावण के सपोर्ट में ऐसे चीजों को प्रस्तुत करता है. So the social media is number 1 Kali Chela. Is the number 1 disciple of the influence of the age of Kali. तो ये सोशल मीडिया है, ये कलयुग का जो है एक रिप्रेजेंटेटिव है. So there's no value to your question. तो इसलिए जो प्रश्न है उसका कोई वैल्यू नहीं You है. simply read the 3 chapters of Lord Ramachandra's pastimes in the 9th canto, and that is sufficient from Prabhupada. अब श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद का 3 अध्याय पढ़िए, उतना सफिशिएंट है. Why go all these other things? Useless. यहाँ वहाँ क्यों जाना है? Just follow Prabhupada. आप प्रभुपाद जी को फॉलो कीजिए.
After all, because of Prabhupada, we are all here. So why become a prostitute? तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब यहाँ पर हैं, तो Re- हमें फिर Remain loyal, faithful, and chaste to Prabhupada. Those 3 chapters in the 9th canto of Srimad Bhagavatam that he translated is sufficient Ramayana for us. And there also he says, there's Chaya Sita. Sita was never kidnapped in the 9th canto. तो हमें प्रभुपाद के ऊपर श्रद्धा रखनी है और उनसे लॉयल रहना है। और प्रभुपाद जी ने इन 9वें स्कंद के 3 अध्यायों में सब कुछ वर्णन किया हुआ है, और ये भी वर्णन मिलता है कि छाया सीता के बारे में। But the world and these Bollywood people and the Hollywood people don't know this. लेकिन संसार में जो बॉलीवुड के लोग हैं, हॉलीवुड के लोग हैं, वो ये सब नहीं जानते हैं। Because they want to make it very exciting to show how another man can run after another man's wife. It's all lust. It's all karma. तो ये सब वो अपने फिल्मों के द्वारा काम वासना दिखाते हैं, कैसे एक पुरुष दूसरी पराई स्त्री के पीछे भाग रहा है। You still have questions? But actually, it's mentioned that Uttar Ramayana, so there is cut copy. Obviously, I agree that it's not proper resource. Listen carefully. Yes, ma'am. You are reading something on the internet. You don't know who translated it, whether that fellow is following regulative principles. You don't know, right? It's such impersonal. You should know the author. And you should know why the other person is questioning. Yeah, I agree with you, Maharaj. But my question You agree with me. You go back to that person and you tell him what I said. now, if in the midst of like let's say 30, 40 people, somebody asks this question, and it's That's something is not mentioned. how it works. If you want to preach, you give them Prabhupada. You give them the 9th canto of Srimad Bhagavatam and stop there. Otherwise, you lose faith. Yes, ma'am. Repeat what I said. महाराज कह रहे हैं कि आप जो भी प्रभुपाद जी ने दिया है उसके ऊपर हमें कन्विक्शन होना चाहिए और वो हमें सामने वाले को प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं तो हमारी श्रद्धा कमजोर होगी। I'm 64 years of age. I may look different outside. I don't know how many more years I live in this body. But I'm a little bit worried and concerned that even in 50 years' time, Prabhupada's position will be eclipsed and everyone will have forgotten Prabhupada because you ask questions like this. महाराज बता रहे हैं कि अभी वो लोग 64 वर्ष के हैं और प्रभुपाद जी पे बेसिकली हमें श्रद्धा रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो टीचिंग्स कोलैप्स हो जाएगा। And this deity of Prabhupada here will no more be Prabhupada. It will be an idol. Because you're not reading his books. और You're reading all sorts of translations of other things and you never even read Prabhupada's books. Be careful. It's happening already. I don't want to ask you the question. How many of you heard from Prabhupada's lectures in the last 1 month or the last 1 week? How many of you read Prabhupada's books in the last 1 month? You know yourself, right? You know. It's a very dangerous position. Repeat what I said in Hindi. महाराज कह रहे हैं कि अगर हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रभुपाद जी का जो विग्रह हमें दिख रहा है वो एक मूर्ति जैसा हमें महसूस होने लगेगा। आप लोग खुद से सोचिए और बताइए कि पिछले 1 महीने में आपने प्रभुपाद जी के कितने लेक्चर सुने हुए हैं। Very important. बहुत महत्वपूर्ण है। We should not forget the source, हमें हमारा स्रोत नहीं भूलना चाहिए, the root of our bhakti हमारे भक्ति का जो जड़ है उसे in Krishna consciousness. कृष्ण भक्ति में His divine grace is Bhakti Swami Prabhupada. इस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद You महाराज। don't water that root by hearing from him, by reading about him, then the bhakti lata beach will become dry. It will shrivel and disappear. अगर हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों से दूर होंगे तो भक्ति लता बीज है वो कमजोर हो जाएगा। That's why I'm doing this special program with this book to show how he struggled with his early disciples right here in Bharat Bhumi.
इसीलिए मैं ये सारे ग्रंथों का प्रमोशन कर रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने भारत भूमि में संघर्ष किया कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। Because I'm not going to waste my time answering questions like that. It has no value. मैं इन प्रश्नों में ज़्यादा समय नहीं देना चाहूँगा क्योंकि इसका कोई मूल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। Controversies have no value. कंट्रोवर्सीज का कोई मूल्य नहीं होता है। Srila Prabhupada is the real value, what he has given us. श्रील प्रभुपाद असली मूल्यवान है और उन्होंने जो दिया है वो मूल्यवान है। Pavan Nimai Prabhu, is that okay? यस महाराज, यस महाराज। हरे कृष्ण। One more question and then we'll go to the books. Mataji, any question? We all right? Okay. So this book is printed by the Bhaktivedanta Book Trust. तो ये किताब जो है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की लिखी हुई है। It's 400 pages, इसके अंदर 400 पेजेज हैं। 20 pages of photos inside. 20 पेज जो है उसमें फोटोएं हैं It's hardbound with a dust cover, और इसके जो है फ्रंट कवर भी है and the paper is white paper. और सफेद कलर के Clear पेजेज printing. हैं इसके अंदर। Okay. Now, originally when the BBT printed, they only had orders for 7,000 copies outside of India. तो जब शुरू में इस किताब का जो प्रिंट हुई थी तो सिर्फ 7,000 कॉपियों का प्रिंट हुई थी, वो भारत के बाहर के लिए। So one of my services that I buy off print runs from BBT. That's my service, to buy off print run. So you bring the price down. तो महाराज की सेवा थी बीबीटी से ये किताबें जो हैं वो खरीदना। So I ordered 10,000. महाराज ने जो है 10,000 किताबों का So ऑर्डर that, किया। so that makes it 17,000 with their 7,000 print run. तो 7,000 वो पहले से प्रिंट कर रहे थे, तो महाराज ने 10,000 का और ऑर्डर दिया तो कुल 17,000 किताबें प्रिंट हुई। So then in order to make it a round figure, I ordered 13,000 to make into 20,000 copies. तो महाराज ने जो है थोड़ा मतलब लगभग राउंड फिगर करने के लिए 20,000 कॉपियों का So I took order. 13,000 copies at the cheapest price because of my 13,000, 65% of the print run, the price came down. तो महाराज ने 13,000 कॉपियों का ऑर्डर किया, उससे जो प्राइस जो मूल्य था इस किताब का वो थोड़ा कम हो गया। So with shipping and customs clearance to the US and to the UK, they sell this book for $20. तो सब कुछ शिपिंग वगैरह ये कॉस्ट ये सब कुछ मिला के जो अमेरिका लंदन में ये $20 के मूल्य से बेची जाती है। And that is equivalent to 1,800 rupees. वो जो है 1,800 रुपए के आसपास आता है। Because I paid less than from one BBT to another BBT, you're getting this book at the retail price in India for 1/3 the price, 600 rupees. तो महाराज ने जो था वो मूल्य जो था जिस हिसाब से चुकाया था, तो भारत के अंदर इसकी कीमत सिर्फ 600 रुपए है। Now don't buy this book in bulk with me for 600 rupees in India and take it to the US and sell it for 1,800 rupees. लेकिन ऐसा मत करो कि भारत में आप 600 रुपए में खरीद के अमेरिका जाके इसको 1,800 रुपए में बेचो। This is the price only for you in India. ये केवल आप लोगों के लिए कीमत है इसकी 600 रुपए। We good? ठीक है। Now, I had an evening program yesterday with some devotees who know me well and I know them well. And we already have 30 copies sponsored for the brahmacharis in the temple here. That's done. Sponsored copies, 30. तो महाराज का जो कल शाम को एक प्रोग्राम था एक भक्त के यहाँ पे, तो जो है उन्होंने 30 कॉपी ब्रह्मचारियों के लिए स्पॉन्सर की थी। So the brahmacharis in the temple, your book is already paid for. You can collect your copy from Krishnanand Prabhu. Stand up. तो ब्रह्मचारी जो हैं ये कृष्णनंदन प्रभु से अपनी कॉपी ले सकते हैं जो कि पहले से स्पॉन्सर की गई है। You can collect it from him today. आज ही आप जो है कृष्णनंदन प्रभु से ले सकते हैं।
Okay, brahmacharis, ब्रह्मचारी you good? Later, not now. अभी नहीं, बाद में. And you can tell the other brahmacharis who may be traveling, one somewhere to South India, some others, that they can get their gift copy that is sponsored by the devotees in the congregation from yesterday evening's program. तो आप जो है बाकी जो भक्ति यहाँ पे नहीं है, जो यात्राओं पे गए हैं, उन सबको भी बता सकते हैं. वो कृष्णनंदन प्रभु से अपनी कॉपी ले सकते हैं, जो कि कल शाम के प्रोग्राम में स्पॉन्सर की गई थी. For example, Gajendra Moksha Prabhu and Saki Gaurangi, they sponsored 15 books for the brahmacharis out of the 30. तो गजेंद्र आनंद प्रभु और सखी गौरांगी And माता what's जी the ने other names? उन्होंने 15 किताबें These are the स्पॉन्सर sponsors for the brahmacharis. उन्होंने 15 किताबें ब्रह्मचारियों के लिए स्पॉन्सर की है. Sankarshan Prabhu sponsored 10 books for the Brahma, that's 25. And the other 5, different devotees. 10 किताब संकर्षण प्रभु ने. Okay, so Gajanan sponsored 15 and 5 he's taking for himself to give to his friends. That's 20. Shailam Krishna Prabhu, he's taken 11 books. 10 books he's going to give to his friends as Gaur Purnima gifts. तो शालिग्राम प्रभु ने 11 Gaur किताब Purnima is our new year. So you give gift. शालिग्राम प्रभु ने 11 किताबें ली हैं. 10 किताबें वो गौर पूर्णिमा पे न्यू ईयर गिफ्ट करेंगे और एक किताब खुद के लिए ली है. गजेंद्र आनंद प्रभु ने 15-20 किताबें ली हैं और शंकरशन प्रभु ने 10 किताबें ली हैं. Pradeep Prabhu, what he did? He gave 5 books sponsored Pradeep Prabhu for the brahmacharis already in last night's program. Okay. And Vijay Lakshmi sponsored 4 विजय books. for the सर्वदा Brahma. माता जी ने 4 किताब और प्रदीप प्रभु ने 5 किताबें स्पॉन्सर की हैं. We good? So we covered that. And now, Ban Bihari, give him the microphone. So Ban Bihari, I have a question for you. Can you translate what I said? Yes, No, Maharaj. T. Okay. I mic with me. So how many books you going to take in as gifts and give for our new year for Gaur Purnim to your friends, and how many books for yourself? Maharaj, one book I will take for myself, and one more book I will take and will donate to somebody. Who's that somebody? I'll find out the interested the person who can. Good. So read. that's nice. He's taking 2 books, one for himself and one for his. He's going to give it as a gift. So let's chant for Van Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So you must come and give your name later Yes, Maharaj, I can give. for the payment. Yeah, sure, I'll do it. So remember, write his name down. Yes, Maharaj. Who Thank else you. likes to help us? Take some books for yourself personally and take books for others. How many books, Prabhu? Hare Krishna Maharaj, I will take 2 books, one for myself and one for my one of my devotee. Are you and Ban Bihari same? No, no. They're not same, huh? Ban Bihari, you set the standard, or how many books you'll take now? Since you're not the same, you can take either one book or take 3 books. Which one you want? I will take 3. How many? 3. Not forcing you. You comfortable? Yeah, I'm comfortable. So let's chant for him 3 books. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So before you can come and take your own copy from the front, from these devotees, that's fine. How many of you would like to take your own copy? Raise your hand. 1, 2, 3, 4. Somebody else? 5, 6, 7. So no, that's okay.
So tell them there's about 10 devotees who will come and take their own copy from the devotees here. जो जो ये किताब लेना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं इधर, आप प्रभु जी से ले सकते हैं Later, like बाद में, after I finish, right? लेक्चर के बाद. Yeah. Now, sometimes there are devotees who are sitting here cannot afford the book because they may be students and they may be a devotee, but their family members are not devotees. You understand? So, who's a student and who's here? Don't be shy. Don't be shy. Who's a student and you're here, but your family members don't know that you're a devotee, so you can't get money to pay for the book? Stand up. तो ये महाराज बोल रहे हैं कि आप में से कुछ विद्यार्थी होंगे और कुछ ऐसे होंगे कि आपके परिवार के कारण आप किताब नहीं लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे जो भी हैं वो कृपया करके खड़े होइए. They don't want gifts, huh? जो परिवार के We're going to give you a gift. If you are a devotee, but your family members don't know you're a devotee and you may be a student and you cannot afford it, please stand up. महाराज कह रहे हैं कृपया करके खड़े होइए. ऐसे जो परिवार के कारण या फिर विद्यार्थी होने के कारण नहीं ले सकते, उनको महाराज गिफ्ट दिलवाएंगे. Don't be shy. शर्माओ मत. No. Even if you're giving gift, they don't want it. महाराज गिफ्ट दे रहे हैं फिर भी किसी को नहीं चाहिए. You can stand up. खड़े होइए. If you're a student यदि कोई विद्यार्थी है तो कृपया करके खड़े होइए. in school or in college, स्कूल कॉलेज में. give the microphone. Take the microphone. Avanita, take the mic. Give it to her with the glasses. Mhm. Yes, Prabhu. I'm not a student actually. I had completed my graduation and my parents are also a devotees. So it's What's your you- name? My name is Divya. Divya. Yeah. So say in Hindi. Uh, Say my name is Divya. मेरा नाम दिव्या है. My parents are devotees. मेरे पेरेंट्स भक्ति कर रहे हैं, मतलब डिवोटीज हैं. Yes. एंड द कंडीशन द प्रभु जी हैज मेंशन कि डिवोटीज नहीं है तो हाथ ऊपर करिए. Say that again. In case you are a student or else your Yeah, family is but then you can afford the book, right? correct. Yes or no? Yes, but currently I No, do no. not have money. You can afford the book, right? Yes. You don't have to give the money today. Okay. You want to take a book? Yes. I Are you going to pay for it? Today I do not have Not money. today. Okay. You take the book today and you pay for the book later, right? Is that okay? Fine. Say that in Hindi. Uh, That you're taking a book but you're going to pay later. I'll take a मैं book आज Hindi. हिंदी मैं बुक आज लेके जाऊंगी, पेमेंट बाद में कर दूंगी. Who's going to pay for the book, mama or papa? डैडी. Daddy. Papa. Don't say daddy. Say papa. Papa is here? Yes, he is. Divya's papa, where are you? Please give your darshan. Stand up. What's his name? भरत. Bharat. Oh, Bharat the Bhumi is from Bharat. Where's Bharat? Prabhu? He is seated over here. Where? Where is he? And pink shirt. Where? Stand up. Give him microphone. Hindi, English, both. Hindi. Hindi. So Divya, ask him how many books he likes to take. One for you and one for his friend. Ask. And then you can read in English and translate in Hindi for him.
She can scream at the father. Divya, ask him how many books he'll take. Yeah. One for Divya. So let's chant for Bharat. He's buying a book for his daughter. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Thank you, Bharat. Hare Krishna. Give the microphone back to Divya. And Divya, is anyone sitting that you know that they devotee but family is not devoting there? Not sure, sir. Huh? Not sure. Everyone, I mean, every parents are devotees as of They now. come from devotee families. Correct. Yes. And amongst the men, the young men, anyone who's a devotee but your family members are not devotees and you cannot afford the book, we'd like to give you a gift. Where's the microphone? Microphone to the back. Behind you, behind you, behind you. This. Hare Krishna. What's your name? Shivani. Jivani. So- Shivani. 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 Yeah. I So- want 5 books. Huh? I want 5 books. You want 5 books Yeah, for charity. for distribution. That's nice. And 1 book for yourself. That's 6, right? Yeah, 4 for charity and 1 for me. Okay, 5. Let's chant for Shivani. 5 books. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And some of you put your hand up, right? You should take more books than you. Just don't take one for yourself. Give them a good Gaur Purnima gift, one of your friends in the community. Even if they don't read English, their sons and grandsons and granddaughters can read to them and translate. Is that okay? All right. Are there any announcements for the devotees? Any announcements to make? Bring microphone here. Stand up. Yes. Don't announce about me. You make announcements. आज इसके बाद सबके लिए प्रसाद है। आज दोपहर को संडे ऑफिस प्रोग्राम है इस ग्रेस गन सुंदर प्रभु के द्वारा। आज आप सब भक्त लोगों से निवेदन है कि उसमें भी अटेंड करें और सेवा में भी वहाँ पर जरूरत पड़ेगा तो सेवा में भी आए। और भी हमारा गौर पूर्णिमा, कौन सा तारीख को गौर पूर्णिमा है? 25। तो उसके लिए कई सेवाएं हैं, वो सब सेवा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे कृष्ण शिव प्रभु बैठे हैं, उनसे वो पैम्पलेट ले सकते हैं। और विशेष रूप से ये जो डांसिंग वाइट एलिफेंट्स का जो अति अभी 600 बता रहे महाराज जी, ये इनवैल्यूएबल गिफ्ट है। तो प्रभुपाद जी के जो लीलामृत के अंदर एक पन्ना जो 4-5 लाइन में जो बताएगा, तो महाराज जी हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज विस्तार रूप में अन्य भक्तों से ये 1.5 साल के अंदर किस तरीके से प्रभुपाद जी ने भारत भूमि में कृष्ण भावनामृत चालू किया, क्या क्या संघर्ष था। अगर हम लोग 2 पन्ने भी पढ़ते हैं, हमारे हृदय के अंदर प्रभुपाद जी के प्रति, प्रभुपाद जी के शिष्यों के प्रति ऐसा भाव अंदर आता है, हमारा जीवन उद्धार होगा। तो आप सब लोगों से विनती है, कई वक्त ऐसे हैं कि हो सकता है कि अंग्रेजी किताब ना पढ़ पाए, लेकिन हमारे बच्चे हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, उनके लिए अति मूल्यवान किताब है। कभी कभी मोटा किताब की बात करते हैं, अभी यहाँ पर ये प्रभुपाद जी के और प्रभुपाद जी के भक्तों के 1.5 साल का जो जीवन है, इसके अंदर आप पढ़ के देखिए। एक अमृतसर दिल्ली का विषय पढ़ के देखिए आप,
किस तरीके से हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज भक्त बने हैं, किस तरीके से हिज होलीनेस राधनाथ स्वामी भक्त बने हैं, सब इस बुक में है, विस्तार रूप में है इस बुक में। तो आप लोगों से विनती है ये किताब आप लोग आज लीजिए इधर, और महाराज जी का कृपा और निपुणता के कारण ये जो बाहर 2000 का किताब हमें केवल 600 में मिल रहा है। आप देखिए, प्रिंट देखिए, बीबीटी का किताब है ये, तो क्वालिटी इज ए क्लास। तो आप सबसे विनती है कि किताब लें। तो महाराज जी ये बता रहे थे कि महाराज जी ऐसे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, इसका वैल्यू जानते हैं, ये वैल्यू प्रभुपाद जी को हम लोगों को देने के लिए घूम रहे हैं। नहीं तो महाराज जी ने क्यों 13,000 किताब ऑर्डर किया है, उनको पता है। और महाराज जी से हम सब लोग परिचित हैं। महाराज जी कई साल से हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर जपाश्रय कितने लोगों ने किया इससे पहले महाराज जी के साथ? 2 बार, 1 2। और महाराज जी हमें भक्ति शास्त्री के अंदर उपदेश अमृत भी पढ़ा चुके हैं और भक्ति सदाचार का शिक्षा देते हैं अन्य। और महाराज के संतुष्टि के लिए, उनका अनुग्रह पाने के लिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि ये किताब लीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विशेष रूप से हम लोग महाराज जी का आभार प्रकट करेंगे और उनसे विनती करेंगे कि रेगुलर सेमिनार और सेशंस करते रहें महाराज, और हमें जल्दी से एक डेट दें। और हमारे मीरा रोड के भक्तों का जो उनसे जो स्नेह हम लोगों को मिलता है, ये स्पेशल। महाराज ने एक बार बताया था कि मुंबई उतरता हूँ तो फिर मेरे को लगता है कि घर मीरा रोड ही जाना है। हाँ, महाराज जी का हमारे ऊपर ऐसा स्नेह है, तो हम लोग भी उनकी तरफ ये रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो एक बार आभार प्रकट करते हुए जोर से सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू महाराज। So did they get prasad? Yes, they have prasad is there. Mahaprasade Govinde. Mahaprasade Govinde. Before that, if you have committed to take some books, you please come and take. Take it now, because this is also Mahaprasad. Everyone, Mahaprasade Govinde. Namo Brahmani Vaishnave. Swapa Punya Vachan Rajan. Vishvaso Navajayake. Sarira Avidyajal. Yadendriya Tahekao. Jivapela Visaya Sagore. Admadye Jiva Ati. Lobomoy Sudurmate. Take Jeta Kotina Samsade. Krishna Bodha Doyamoy. Kodibara Jiva Joy. Swapasad Anadilabai. Sayanamritapao. Shri Shri Radha Krishna Gunagao. Premedako Shri Chaitanya Nidai. Jaya Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadha. Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, Ananta Kodi Vaishnava Vrinda ki, ISKCON Mira Road Yatra ki, Bhagavat Breakfast Prasadam ki, Tathai Go Premanande.